और अगर तुम्हारे पेट में रोटी नहीं है तो मैं तुम्हें कितनी साधना सिखाऊंगा तो साधना का शक्ल भी तुम्हें रोटी की तरह दिखाई देगी। तो पहले साधना के माध्यम से तुम्हारे जीवन के अभाव दूर होने चाहिए। जब जीवन के अभाव दूर होंगे तब जीवन में पूर्णता आ पाएगी। पहले तो ये आवश्यक, क्योंकि हम ग्रस्त में जिस दिन साधु लंगोटी लगाई हुए होते बच्चा कुछ नहीं, ऑलराइट, मैं तुम्हें कह दूंगा अच्छा बच्चे कुछ नहीं, ये घर बार क्या है, चलो मेरे साथ, चलो और द्वार तक पर। उनका महाराज आप तो लंगोट लगाए हुए ठीक है, मेरे घर में बच्ची बड़ी हो गई, 24 साल की, शादी तो करे पहले, तुम्हारी बच्ची नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है दुनियादारी क्या कहती है। तो साधु को मालूम नहीं है, भगवान कपड़े पहनने वाले नहीं बता सकता कि ये घर में जो टेंस से लड़की 24 साल की हो गई वो कितनी परेशानी है, वो नहीं समझ सकता। या समझ भूख है उसको साधु नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो कहीं खड़ा होगा तो महाराज आशीर्वाद दे देंगे, उनको घी पकवान खिला देंगे, हमसे मोटे ताजे लाल सुर्ख है, तो चेहरा हम तो गर्पित है और चेहरा पिचका हुआ, उनका चेहरा पिचका हुआ ही नहीं। कोई साधु सन्यासी भूखा नहीं मर रहा है, एकदम लाल सुर्ख अंगार की तरह बैठे, और हम बहुत पीले पड़े हुए हैं, दुखी और तनाव में। इसलिए तो उनको मुफ्त की रोटियां मिल जाती है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ हो पाता है। इसलिए साधना का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो भी अभाव हो, अभाव है रोग, अगर जीवन रोग है, आपको बहुत ज्यादा खांसी, बहुत आपको ज्यादा दमा है, तो मैं साधना कितनी बताऊंगा, उस साधना में आपको सफलता मिल नहीं सकती कि साधना कर नहीं सकते। खांसी करेंगे कि साधना करेंगे, अगर पुत्र नहीं है तो भी साधना नहीं कर सकता, दम एक टाइम से। लड़की बड़ी है तो भी साधना में आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। घर में पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है या पति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और मैं कहूंगा अभी आप जाकर आंख बंद करके बैठेंगे, तो मैं तो पहले कहा था कि बगीचे मत जाओ, वहां कुछ नहीं सिखाते हैं। कल तुम ये बीच में आंखें बंद करके बैठ के दुकान जाना है कि आंखें बंद करके बैठ क्या करो तुम, ये लड़ाई झगड़ा। इसलिए साधना का उस श्लोक में, जो मैंने पहली बार श्लोक आपके सामने कहा, श्लोक का तात्पर्य है कि उस साधना के माध्यम से गुरु उनकी उन समस्याओं का निराकरण करे जो उनके जीवन के अभाव है। जो जीवन का आपके अभाव है वो गुरु दूर करे, तब वो गुरु है। उपदेश देकर के जाने वाला गुरु नहीं हो सकता, वो तुम्हें उपदेश देकर के फिर और वो तुमकी रोटी रोजी का साधन है। क्योंकि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हें 25, 50, 5, 10 रुपए बैंड चढ़ाओगे, और तुम्हें 100, 200 रुपए भी चढ़े तो 8,000 रुपए महीना कलेक्टर को नहीं मिलता, मुझे तो मिल जाएगा, और मुझे काम करना नहीं पड़ता, आप दुकान में बैठना पड़ता है, मैं तो गप्पे मार करके आपको क्या करके 8,000 रुपए कमा लूंगा। क्योंकि 5-5 रुपए चढ़ाओगे, कम से कम 10 रुपए चढ़ाओगे, तो भी इतने लोग चढ़ाओगे तो कम से कम 2,000 रुपए रोज जाएंगे रोज के। उनका तो बिजनेस हो गया, पैसा हो गया। पैसे से उनको खुद को मालूम है कि इससे कुछ होना नहीं है, और आपको मालूम पड़ गया 5 देने से साला कुछ क्या फर्क पड़ेगा, चलो दे दो। इससे अभाव दूर नहीं, वो गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह है जो आपकी समस्याओं को समझे, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों में साथ हो, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए उस साधना को समझाए, उस मंत्र को समझाए जिसके माध्यम से वो तकलीफ दूर हो। आपके प्रयत्नों से तकलीफ दूर नहीं हो सकती, होती तो आप कर लेते, फिर मेरे पास आते ही नहीं। आपके प्रयत्नों से अगर आपकी गरीबी दूर हो जाती या कर्जा दूर हो जाता तो फिर मेरे पास आप क्यों आएंगे? गुरु के पास जरूरत क्या है आपकी? आप 45 साल मेहनत कर चुके हैं, ये सब कुछ करके देख लिया है, कर्जा नहीं उतर रहा है। 45 साल करके देख लिया है कि बेटा कहना नहीं मान रहा है, तो आप भले कितने समझाएं, बेटा कहना नहीं मान रहा है आपका। लड़का नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, घर में पति पत्नी लड़ाई झगड़े हैं तो हैं, बीमारी अगर है तो आप सैकड़ों बार दवाई ले चुके हैं, अब आपके प्रयत्नों से और डॉक्टर के दवा नहीं मिट रही है, बीमारी नहीं मिट रही है। तो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि सही गुरु हो जो आपकी समस्याओं को समझ सके, और वह खुद पूर्ण हो आपस में। वह खुद ही अधूरा होगा, भिखमंगा होगा, तो आपको क्या देगा? जो खुद ही आपने 5 रुपए की याचना रखेगा वो आपको संपन्न बनाएगा कैसे? मैं उम्मीद करूंगा आप 10 रुपए बैंड चढ़ाएंगे, मैं आपको क्या संपन्न बनाऊंगा? मैं तो खुद भिखारी कैसे करूंगा? मुझे खुद में साधना में पूर्णता होनी चाहिए। जो आप पूजा पाठ करते हैं वो करें, जो भक्ति करें वो आप करें, मगर भक्ति के माध्यम 10 साल भक्ति करने के बाद भी जिनकी समस्या नहीं सुलझी तो अगले 20 साल के बाद भी नहीं सुलझ पाएंगे। उनके लिए रास्ता अलग है, कनाट प्लेस का रास्ता अलग है, करोल बाग का रास्ता अलग है। आप करोल बाग जाना चाहें तो करोल बाग जाइए, पर कनाट प्लेस जाना चाहे तो फिर उसको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा आपको, और चुनेंगे तो वहां पहुंच पाएंगे तो समस्याएं दूर हो पाएंगी। दूसरी सीढ़ी उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करने की है, और तीसरी सीढ़ी अपने आप में पूर्ण आनंद मग्न होने की क्रिया है। ये तीनों सीढ़ियां साधना के माध्यम से। इस छोटे से प्रवचन में ये सब कुछ संभव नहीं था कि मैं साधना की बारीकियां समझाता आपको, फिर भी मेरी कुछ पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से आपको प्रारंभिक ज्ञान हो सकता है कि साधना क्या है। अपने जीवन के अन्य क्रियाकलाप करते हुए भी, भक्ति करते हुए भी, मैं भक्ति के बारे में भी आपको इतने अच्छा बोल सकता था जो ये बोला। वेद पर भी, उपनिषद भी, पुराण पर भी बोल सकता था, और ब्रह्म पर भी बोल सकता था जहां आपको समझ में नहीं आता। वह तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते तो उनके बीच में ब्रह्मत्व का उपदेश भी देता है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो क्या सिद्धियां है, वो बोल सकता है। मगर आपको जीवन में जो आवश्यक है उसके बारे में मुझे बोलना था। और अगली बार अगर मुझे आने का मौका मिला तो मैं साधना की बारीकियां स्पष्ट कर सकूंगा कि वे साधनाएं क्या हैं, किस तरीके से की जा सकती हैं। मैं तो चाहता हूं कि
आपके जीवन में कोई अभाव रहे ही नहीं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। दोनों दृष्टियों से आप पूर्णता प्राप्त करें और आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त करें जिसको धर्म कहा गया है। जहां आपके हाथों से इतना पैसा है कि आप मंदिर बना सकें, देवालय बना सकें, स्कूल बना सकें, और फिर अर्थ की प्राप्ति हो जहां आप संपन्न हो सकें, काम की प्राप्ति हो जहां आपकी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य सब कुछ मिल सके, और ये सब कुछ हो तो आप बहुत शांति के साथ मोक्ष को प्राप्त हो सकेंगे। मगर इन सब के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो परब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा है, मगर यदि गुरु है तो परब्रह्म है, पाखंडी है तो ब्रह्म नहीं हो सकते। गुरु पाखंडी भी हो सकते हैं, गुरु छली भी हो सकते हैं, धोखेबाज भी हो सकते हैं, विश्वासघाती भी हो सकते हैं, आपको लूटने वाले भी हो सकते हैं, मगर वो गुरु नहीं हो सकते, वे पाखंडी हो सकते हैं। गुरु तो जो निश्चल भाव से आपको रास्ता बता सकते हैं, वह गुरु हो सकते हैं। ऐसे जीवन में आपको गुरु मिले, आपके जीवन में सच्चा कोई गुरु प्राप्त हो सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सके। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपके जीवन पूर्णता आ सके, ऐश्वर्य आ सके। एक बार फिर मैं आपको हृदय से आशीर्वाद। And if all of you are starving, and I teach you sadhana, then all that shall appear before your eyes will be food. Hence, first it is necessary to remove all shortcomings in your life through sadhana, and we shall achieve totality only when all the scarcity in one's lives is removed. This is necessary, for we are just householders. If we had been ascetics, then it would not have mattered. If I had been an ascetic, I would have said to you, leave your house, come with me to Haridwar. You would have said, Your Holiness, you are an ascetic. It is fine with you to say so. But I have a daughter and have to get her married first. You have no daughter. What do you know of worldly responsibilities? And all this is true, for an ascetic cannot know all this. He cannot understand the responsibility of having a daughter. He cannot understand all the problems faced in a family life. Only you can understand all this. An ascetic does not know what hunger is, because wherever he goes, people offer food to him in devotion. The ascetics are healthier than us, while we have to struggle for food. Their cheeks are full, while ours are sunken. No ascetic has to go hungry, while we always have to worry about food, clothing, and all other tensions which fill our life. This is because they do not have to struggle for food. They get it free, while we have to toil hard, and then too we manage to earn just enough to fill our bellies. Hence, sadhana is a process of removing all the shortcomings of life. If you are ill and I ask you to accomplish a sadhana, then you cannot carry it out. How can you do penance when you can't even speak out due to incessant coughing? If you do not have a son, you cannot accomplish a sadhana because you shall always be worried about having a child. If you have a daughter of marriageable age, then too you won't be able to concentrate your mind. If I ask you to go and meditate closing your eyes, and you have a quarrelsome spouse, then as soon as you sit down in meditation, she will start shouting at you. I told you, he can teach nothing. Of what use is all this sitting with your eyes closed? Why don't you go to the shop? This is why all problems of life should be first sorted out. The verse which I had recited in the beginning means that a guru must help in removing all the problem from one's life through sadhana, and he is a guru only if he is able to do so. Those who just preach and leave are not gurus. Preaching is just a means to earn a living, because if I preach before you, you shall offer 5, 10, 20 rupees. And if you offer 200 or more rupees daily, then I shall earn at least 8,000 rupees in a month, which is even more than what a collector earns. I do not have to work while you have to sit in your shop all day long. I will give a discourse
speak a few words and will earn 8,000 rupees. But this way your problems will not be solved. Such a person, in fact, cannot be a guru. Guru is someone who can understand your problems. Guru is one who remains with you through all ups and downs of life. Guru is one who explains such sadhanas to you through which all your problems can be solved. Your tensions cannot be removed by you. If this had been possible, you would already have done so, and you wouldn't then have come to me. If you could have vanquished your poverty or could have cleared your debts on your own, then why would you have come to me? Then what would have been the need of a guru? You have toiled for 40 long years and the results are before you. You have seen for 40 years that your son is disobedient. You may try as much, he won't listen to you. If he is not studying, you cannot make him study. If your wife keeps quarreling, you can't prevent it. If you are ill and even after consuming different medicines, you have not been cured, then what should be done? The only way out is obtaining a guru who can understand your problems and who has himself achieved totality in life. If his own life is incomplete, then what can he give to you? How can someone who asks for mere 5 rupees from you make your life affluent? If I expect you to offer 10 rupees to me, then how can I make you wealthy and prosperous? If this is so, I myself am a beggar, then how can I help you? To help you, I myself must be fully accomplished in sadhana. I say all this because all the problems, tensions in our lives can be solved only through sadhana. The Shastras have given a shloka which represents the basic thought behind sadhana. Purvai matam purva madaiva tulyam jnanor tava paritam bhavatam sadaiva chintyovameva bhavatam paripurna purnam purno twadam bhavata purnamadaiva purnam. Sadhana means obtaining that divine help by the chanting of different mantras through which we can achieve totality of life. We can obtain wealth through Lakshmi sadhana and knowledge and wisdom through Saraswati sadhana. We are ordinary human beings and we cannot accomplish sadhana with the help of human beings. For achieving success in sadhana, it is hence necessary to know about all the gods. You chant the mantras of the gods, but are you acquainted with the form of the gods? You make offerings to Lord Rama, but you are not sure if you know his true form. Only when you realize the true form will you be able to fuse in the Almighty and thus achieve success. Through sadhana, you shall be able to form a link with God. He will be able to understand you and you shall be able to realize his true form. This is why it is said in this shloka that if you chant the mantras related to Lakshmi, Saraswati, Lord Shiva daily and with full devotion, then surely the distance between you and God will diminish. When this distance shall diminish, you shall surely obtain something from them because they are complete personalities in themselves. This is why we call them God, and this is why we worship them as Lakshmi, Saraswati, Shiva, Brahma and Vishnu. They are yogis who have achieved totality and we can achieve the same from them. We can obtain 100 or say 1000 rupees easily from a millionaire because he is so rich.
Lakshmi has infinite wealth, more than any billionaire, and we can obtain wealth from her, but only when the distance between us and her becomes less. And the way to come closer is sadhana. And sadhana means chanting of mantras, which comprises of special words which the gods can understand. If I speak to you in Chinese or Persian, you won't understand a word of it. Similarly, gods understand the language of mantras. It is not necessary that the person who is your guru at the time of your birth shall remain your guru throughout your life. Said Dattatreya had 24 gurus. Similarly, Lord Rama had 6 gurus. First guru was Vasishtha, then Vishwamitra, who initiated him through Diksha and who taught him the art of using weapons. Then Garg, Atri, Kanad, and finally Pulastya. Krishna too had 2 gurus, Sandipani and Drona. Guru is someone who gives knowledge and wisdom. Wherever you can obtain knowledge, you should do so. If you are performing a sadhana, if you worship daily, if you are devoting yourself in the feet of God, keep doing all this. But even after 10 years of such devotion and prayers, you will not be able to solve your problems. The way to these solutions is different. The way to Connaught Place is different, and the way to Karol Bagh is different. If you wish to go to Karol Bagh, you will have to take the road to Karol Bagh, and if you wish to go to Connaught Place, then you will have to choose a different path. And when you choose prudently, you will reach your destination, and then all your problems shall be solved. The next step is to reach the state called Brahma, and the third step is the process of losing oneself in joy. And these 3 states are possible only through sadhana. It was not possible to explain the intricacies of sadhana in such a short discourse. But there are some books written by me through which you can gain the basic knowledge of sadhana even when being busy in your life and even when leading a life of devotion. I can speak on devotion just as well as I have spoken on sadhana. I could have spoken on the Vedas, the Upanishads, Puranas, and even on Brahma just as well, which you would not have understood. If you had been great scholars, I could have given a discourse on Brahma. What is Brahma? Where is he? I could have spoken on this subject, but I had to speak on something which would be beneficial in your lives. And next time when I get a chance, I will explain the intricacies of sadhana. I will explain what is sadhana, how it can be accomplished. I wish that there remains no deficiency in your lives, neither in the mundane sphere nor in the spiritual sphere. May you achieve completeness in both these spheres of life. May you attain all that in your life which has been called dharma. May you acquire so much money that you go on to build temples, schools, orphanages, and may you become wealthy and prosperous. May you acquire all pleasures of life, a good wife, children, friends, comforts, fortune, and prosperity. And when you achieve all this, you will be able to attain salvation along with great peace. But for all this, a guru is essential. This is why a guru is called Brahma, Vishnu, Shiva, and the ultimate divine power, the Param Brahma. If he is a real guru only, then he is Param Brahma.
But if he is an impostor, he cannot be. Guru can be fraud, Guru can be deceitful, Guru can be unfaithful, he may loot you. But such persons are not in the real sense Gurus. Only one who can show you the right path is a Guru. May you acquire such a Guru in this life itself. In Rajasthan, from where I come, Nigura is a word used as an abuse. If a person does not have a Guru in his life, then it is an abuse in itself. Your Nigura means you do not have a Guru. How then shall you achieve totality of life? This is the worst abuse. I bless you and may you obtain a real Guru in your life. May you achieve totality in your life. May you attain prosperity. Once again, I bless you from the depths of my heart.